In the previous video, we learnt that the poem A Legend of the Northland, it is a ballad. A ballad is a poem in which poet tells us or narrates a story in short stanzas. Each consists of 4 lines. As we can see that this is a ballad. The author is telling us a story about Saint Peter, who is the follower of Jesus Christ. So one day, what he used to do, he used to roam around the world and used to give lectures, religious lectures to the people. Okay. So one day when he was very hungry and he was feeling very weak because he hadn't ate anything entire day, so he came to the cottage where a lady was making cakes. She was baking cakes, and he asked the lady for one cake from out of so many cakes that she was baking. So instead of giving the cake from her store, she started baking a smaller piece of cake for the saint, because she felt that the cakes which she made are too large to be given away. But soon she realized the cake that she was baking is also very large in size to be given away. So she gave her second attempt to make the cake. But again she realized that this piece of cake is also very large as the previous one. So again she gave the third attempt. So she took a smaller piece of dough and she rolled and rolled the dough into a flat piece and make the cake as a wafer, flat wafer. But again she was so greedy and selfish that she wasn't able to part with that small piece of cake as well. So she reasoned the saint that she could not give the cake, as she feel that it is a large part to be given away. To that, saint became angry because he was hungry, and when he saw the greediness and the selfishness of the woman, she became very angry, and he cursed the woman that God has given you shelter, food and fire to keep her warm, but she was so greedy that she could not share even a single thing with anybody. Okay. And he also cursed that she does not deserve to live in the form of a human being, as human beings are known for their generosity, kindness and the way they help each other. Okay, so this is from where we have left the topic. Now we will do the stanza number 13th. So in this video we will do stanza number 13th, 14th, 15th and 16th. So first I will read all the stanzas and then I will explain you paragraph wise. Let's read. Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes are burned black as a coal in the flame, and every country schoolboy has seen her in the wood, where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Okay, so stanza 13 says, now you shall build as the bird do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. Scanty मतलब होता है very little, boring means make a hole. ये यहाँ पे बोर होने वाला बोरिंग नहीं है, बोरिंग मतलब to make a hole, ठीक है, in something with a tool or by digging it, ठीक है. So
द लिटरेरी डिवाइस एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे सिर्फ 3 ही लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुई हैं पूरे poem में. One is repetition of the words, other is alliteration. Alliteration is the repetition of consonant sounds in 2 or more closely placed words. जब दो या दो से ज़्यादा closely placed words में एक ही तरीके का consonant sound आता है. A E I O U 5 vowels होते हैं और जितने भी rest बचे हुए जितने भी alphabets होते हैं उनको हम consonant बोलते हैं. अगर किसी का भी sound आता है तो उसको alliteration बोलते हैं. और similarly होता है जब हम कोई चीज़ compare करते हैं using words as or like. तो यहाँ पर in stanza number 13 line number 1, now you shall build as the birds do. So B का sound prominently आ रहा है closely placed words में, तो alliteration यूज़ हुई है. Then उसके बाद line number 3, by boring and boring and boring. So यहाँ पे B का sound prominently आ रहा है. B is also consonant, तो यहाँ पर B alliteration यूज़ हुआ है. In addition to it, यहाँ इस stanza में बहुत repetition हो रहा है word का. Repetition of the word boring, BORING. So boring 3 बार यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे literary device repetition भी यूज़ हुई है. Now this paragraph means Saint Peter follower थे Jesus Christ के, ठीक है. He was a learner. So he cursed the woman that hence she would become a bird. तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया या कर्स कर दिया कि वो अब बर्ड बन जाएगी. Because she did not deserve to the human form. She shall become a bird, and just like birds build their houses by boring into the wood and collect very little food by working hard the entire day, similarly she would also work hard in the dry wood all day and get little food and make a small place for herself to live in. Now जो सेंट थे, he cursed the woman कि वो एक बर्ड बन जाए, क्योंकि वो एक डिज़र्व नहीं करती ह्यूमन फॉर्म में रहना. जैसे बर्ड होल्स बनाकर वुड में रहती है और पूरे दिन हार्ड वर्क करती है थोड़ा सा फूड कलेक्ट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही द लेडी विल डू. शी विल वर्क ऑल डे एंड गेट वेरी लिटिल फूड टू ईट एंड मेक अ वेरी स्मॉल प्लेस फॉर हर सेल्फ टू लिव इन. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट द सेंट कर्स्ड. नाउ स्टैंजा 4th या 5th स्टैंजा में ही पोएट ने हमें बताया था कि he don't know that the story is true or not, because ये एक फोक टेल है. फोक टेल्स वो होती हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास्ड होती हैं ओरली. जैसे परदादा ने दादा को बताई, दादा ने पापा को बताई, ऐसे. तो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है ये. बट ही डोंट नो कि वो स्टोरी सच में ट्रुथ है कि नहीं है. बट ही इज़ जस्ट टेलिंग द स्टोरी जस्ट टू गिव अ इम्पॉर्टेंट मैसेज टू द रीडर्स. ठीक है. ओके, let's come to stanza number 14th. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. Okay. So what happened now? As soon as the Saint Peter cursed the woman, जैसे ही woman को curse किया गया, she did not get a chance to speak for herself, because that was very moment she flew up the roof through the chimney and flew out in the form of a bird. तो जैसे ही उसको कर्स किया गया, उसको चांस भी नहीं मिला कुछ बोलने का, और जैसे ही उसे कर्स मिला वैसे ही दैट वेरी मोमेंट वो रूफ से थ्रू द चिमनी वो फ्ली हुई इन द फॉर्म ऑफ अ वुड पैकर. वो एक बर्ड बन चुकी थी क्योंकि पीटर सेंट ने उसे कर्स कर दिया था दैट शी विल कन्वर्ट इनटू अ बर्ड. स्टैंजा नंबर 15 सेम. Let's come to stanza number 15. She had a scarlet cap. Scarlet mean brilliant red cap. Brilliant red color को हम scarlet बोलते हैं. On her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burnt, black as the coal in the flame. So when the woman turned into a bird, at that time she was wearing a red cap. जब वुमेन एक बर्ड में कन्वर्ट हुई तो उस टाइम पे वो एक कैप पहनी हुई थी, तो वो तो सेम रही. द कैप वॉज देयर ऑन बर्ड्स हेड ऑल्सो, बट द वुमेन्स रिमेनिंग क्लोथ्स हैड बर्न्ड एंड टर्न इनटू ब्लैक इन कलर जस्ट लाइक कोल. तो वुड पैकर इज़ ब्लैक इन कलर. सो जैसे ही
द वुमन टर्न इनटू अ बर्ड, उसके जितने भी क्लोथ्स हैं वो क्लोथ्स ब्लैक कलर में चेंज हो गए. हेयर सिमिली इज़ यूज्ड. Simile is used because the color of the burnt clothes is compared to that of coal. Simile कब यूज़ होती है? जब कंपेयर करते हैं हम कोई दो चीज़ बाय यूजिंग वर्ड्स एज और लाइक. तो यहाँ पर हमने क्लोथ्स को कंपेयर किया गया है द कलर ऑफ बर्न्ट कोल. ठीक है. Stanza number 16 says, and every country schoolboy, country is belong to the countryside, that is the rural area. Rural area को country बोला कर जा रहा है. ठीक है. Has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. Now people living in the countryside, even the small children who go to school, seen this kind of bird in the woods. So जो लोग थे जो वहाँ पे रहते थे एंड इवन जो चिल्ड्रन थे जो स्कूल जाया करते थे उन लोगों ने भी ऐसी काइंड ऑफ बर्ड्स इन द वुड, मतलब इन द फॉरेस्ट देखी थी. दे सी दैट दे स्टे देयर ऑल डे एंड कीप्स ऑन डिगिंग द वुड विद हर बीक or to collect her food. So what she used to do when she was converted into a bird, जो उसको कर्स मिला था, she used to dig all the day. वो होल बनाती रहती थी वुड में all the day from her beak और फूड कलेक्ट करती थी. Whenever any child sees this kind of bird, then his elders tell him this story. और जब भी कोई बच्चा ऐसे काइंड ऑफ बर्ड देखते थे तो उनके जो एल्डर्स थे वो उन्हें ये स्टोरी बताते थे. दे से दैट द बर्ड यूज टू बी अ वुमन अर्लियर एंड दे टेल देम कि जो ये बर्ड है वो पहले वुमन थी एक. शी वॉज वेरी ग्रीडी एंड सो शी वॉज कर्स्ड बाय सेंट पीटर एंड टर्न इन टू अ बर्ड. दे सेड गेट अ टीचिंग फ्रॉम दैट दे शुड नॉट बी ग्रीडी. सो वो उन्हें बताते थे कि जब कि वुमेन बहुत ग्रीडी थी और बाय सेंट पीटर वो कर्स हुई है. दैट इज़ द रीज़न शी इज़ अ बर्ड नाउ. एंड लोगों को, बच्चों को ये एक लेसन मिलता था कि हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए. वी शुड नॉट बी ग्रीडी. ओके. सो इस स्टैंजा में भी 16 स्टैंजा में भी रेपिटिशन यूज़ हुआ है. रेपिटिशन ऑफ वर्ड बोरिंग 2 बार यूज़ हुआ है इन द लास्ट लाइन. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड. ओके. So that's it for the video. We have ended the topic, so I want you to go through the poem, and if you have any doubt you can ask. Thank you.